So if you're having a hard time shooting in low light, then this video is for you. But first check these videos out. ये मैंने दिवाली के टाइम पे ली थी और ये काफ़ी लो लाइट में ली है मैंने using my Fujifilm X-T4 and I shot these on f-log. Let's check these out first. Dreams in the sand, remembering where we began to see this empty canvas, the future and all that could be. Shadows turning into light, our eyes open wide. And when we're together, the world comes alive. Every color shining so bright. The hope that we hold, the story unfolds. Together we find we'll get there one day at a time. Up in the clouds, reaching the stars from the ground. Hi everyone, my name is Hitesh Gill and the channel you are on is called Winters and Drum Films. Actually, I've been looking at a lot of numbers that YouTube is throwing at me and I've been observing that a lot of you who enjoy my content are not subscribed to my channel yet. Please ऐसा मत करो यार. I need your support right now. I'm always going to make sure that you always get quality content in return of all the time that you are going to spend on my channel. तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार. ऑल्सो मुझे बताओ कमेंट्स में कि आपको ये वीडियो जो मैंने पूरा एक मोन्टाज बनाया आपको अच्छा लगा या नहीं लगा. मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो आई डिड नॉट लाइक इट. सी आई डिड अ बिग मिस्टेक वाइल शूटिंग दिस और ये आपको मैं आगे वीडियो में बताऊंगा व्हेन आई विल बी एक्सप्लेनिंग हाउ टू शूट इन लो लाइट सिचुएशंस. लेट्स गो. Okay, I need to put this on. तो ठंड बहुत हो रही है एंड ऊपर से माई हेयर लुक मैसी सो या वी गुड विद दिस. तो जितने भी मैं आपको टिप्स इस वीडियो में देने वाला हूँ दोज ऑल रिवॉल्व अराउंड जस्ट वन थिंग एंड दैट इज़ एन अटेम्प्ट टू कीप योर आईएसओ एज लो एज पॉसिबल. So each and every tip that I am going to give you is related to that only, and that is because that is the only way to get good footage in low light. If you can keep your ISO low, then you can get the cleanest possible footage in the dark environments also. Let's go. So जो पहली tip है that is very basic and that is using lights. Even if you don't have a lot of lights and even if you don't have a lot of space or if you are traveling and you cannot carry a light with you, तो भी आप लाइट्स यूज़ कर सकते हो जस्ट बाय अ स्मॉल सिंगुलर लाइट सोर्स. बहुत सारी छोटी छोटी लाइट्स अवेलेबल हैं मार्केट में. आई यूज़ अ योंगनो लाइट LED स्टिक. इट्स नॉट अ वेरी कॉम्पैक्ट वन. लेट मी जस्ट गो एंड गेट इट. So I use this Yongno LED stick. I don't know how to pronunciate it. Yongno. So it's not the most compact option in the market, but मेरे को ये बहुत पसंद है. आई यूज़ इट वेरी ऑफन बिकॉज ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट. ये बहुत ब्राइट कर देती है इन्वायरमेंट को, सो आई लाइक इट. And there are a lot of other small light options available on Amazon and I will link all those lights in the description. You can go and buy those lights from there. It'll support my channel at no extra cost to you. Thank you. See, the thing with lights is that it is not always necessary कि आप पूरा जो भी सीन है उस पूरे सीन को lit करो. It is not that important. The most important thing in your video is your subject. So just carry a small light so that you can lit your subject properly. And if you are able to do that, then you're good to go. I mean, you can keep your ISO as low as possible in that case and you can still see your subject in the video. The second tip would be to keep your frame rate as low as possible. See, you should always have a very clear intention about the frame rates that you are shooting on. We always have to follow this 180-degree rule. Well, not always, but in most of the situations we have to follow this 180-degree rule, according to which if you are using a 24 frames per second, then you have to keep your shutter speed to 1/50th of a second.
तो आप जितना FPS बढ़ाते जाओगे आपकी शटर स्पीड भी उतनी ही ज़्यादा होती जाएगी एंड आपका इन्वायरमेंट जो है ओवरऑल वो उतना ही डार्क होता जाएगा. In that case, you're gonna have to crank up the ISO, which is one thing that we should totally avoid. So if you don't need to slow down your videos, then shoot on 24 or 25 FPS so that your shutter speed will be 1/50th of a second. And if you want to slow down your videos a little, then shoot on 50 or 60 FPS. That way you can keep your ISO as low as possible. Don't go for 120 FPS until and unless it's super necessary. आपको 120 FPS सिर्फ तभी यूज़ करना चाहिए जब आपका एक clear intention है and you want to emphasize on something. Only then it helps in the storytelling in your video. तभी आप 120 FPS को justify कर सकते हो उस situation में. अब जो third tip है that would be a little expensive for a lot of people, but there are a lot of cheap options also available, and the tip is to use prime lenses with wider apertures. So the wider apertures will help you in lighting up your image, your scene without cranking up the ISO, which will help you to keep your images as clean as possible. तो ये एक फ़ायदा होता है प्राइम लेंसेज का ओवर जूम लेंसेज. आप प्राइम लेंसेज पे वो f1.2, f1.4, f1.8 इस ऐसे एपर्चर्स तक जा सकते हो जो कि बहुत सारी लाइट अंदर आने देते हैं, क्योंकि जितना एपर्चर खुलेगा उतनी ही लाइट अंदर आएगी एंड आपका सीन उतना ही ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा. एंड well, there is one loss to it, like there is one disadvantage of using wider apertures, and that is when you want to focus on a large area. उस केस में आप एक वाइड एपर्चर यूज़ नहीं कर सकते हो, बट दैट इज़ अ टॉपिक फॉर अ सेपरेट वीडियो. हम किसी और वीडियो में उस पर बात करेंगे. अभी फ़िलहाल लेट्स स्टिक टू द टॉपिक. The last tip for this video, and it is one of the most important tips for shooting in dark environments, and that is avoid using log profiles. And let me explain why it is so important. जो आपने अभी वीडियो देखी बिगिनिंग में, that was shot on f-log, and it was a mistake because, well, to begin with, log profiles का जो purpose होता है that is to squeeze out that high dynamic range out of your sensor. But you know, when you're shooting in a very dark environment, then it is not a very high dynamic range kind of a situation, you know, to begin with. तो पहली बात तो डार्क एनवायरनमेंट्स में लॉग प्रोफाइल यूज़ करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है. एंड द सेकंड रीज़न इज़ दैट यू ऑलवेज हैव टू ओवर एक्सपोज योर वीडियो व्हेन यू शूटिंग इन लॉग प्रोफाइल्स इन मिररलेस कैमरास, which is not very ideal when you're shooting in dark, because you have to crank up the ISO to such levels where you should not be going to. आपको ISO बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा फुटेज को ओवर एक्सपोज करने के लिए, और उससे क्या होगा कि फुटेज क्लीन नहीं रहेगी, फुटेज में नॉइज़ आएगा बहुत सारा. You can get rid of it in your software. I mean, I got rid of it in Resolve. मेरा जितना भी जो इस वाली वीडियो में जितना मेरा नॉइज़ आया था, जो कि आया था, मतलब बहुत नहीं था, but it was there. So I got rid of it in DaVinci Resolve using the denoiser. But you know, that always adds up an extra step in your process, and it always takes away the details. कुछ ना कुछ डिटेल्स पे फ़र्क पड़ता ही है जब आप denoiser को यूज़ करते हो. तो अगर आप 4K और अच्छी बिट रेट पे शूट कर रहे हो तो हो सकता है उतना असर ना पड़े, बट स्टिल इट अफेक्ट्स योर वीडियो. So try avoiding S-logs when you're shooting in Sony. Try avoiding F-logs when you're shooting on Fujifilm, and similar is the case for Canon, Panasonic, and all other companies. You can go for Eterna profile on Fujifilm X-T4. It is amazing. It is a little bit flat, and the colors that I get out of it are amazing. And similarly, you can go for HLG in Sony. And I am pretty sure कि बाकी कंपनीज़ में भी कुछ ना कुछ ऐसे ही ऑप्शंस ज़रूर होंगे. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज. थैंक यू सो मच. मैं ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को आपको एक छोटा सा एक ऐसे सीक्वेंस दिखाना है, बी रोल सीक्वेंस दैट आई शॉट इन अयोध्या. आई रिसेंटली शॉट अ डॉक्यूमेंट्री फॉर अ फ्रेंड देयर, एंड आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट. जो नेक्स्ट वीडियो यूट्यूब पे आने वाली है वो डॉक्यूमेंट्री ही होने वाली है, तो आई एम क्वाइट एक्साइटेड अबाउट इट. एन्जॉय दिस बी रोल सीक्वेंस. I'll see you in the next video. Well, not exactly next to next, because next is going to be the documentary. So I'll see you in the next to next video. Till then, keep grinding, be kind. Oh, I switched it. Be kind, keep grinding. Bye bye.